Good morning to all of you, students of class 9 in physics class. Welcome back once again to all of you. Okay, and today's our chapter is motion, and today we will discuss about graphical representation. Okay, uh, properties of graph in the physics chapter, also in motion chapter. Okay, and last previous videos we have discussed about distance time graph. Today we will discuss about a speed time graph. Okay, this is very important for solving the numerical problems, and this is critical topic uh, in the motion chapter. So please carefully watch this video. Here is given when the speed of the body remains constant. If the speed time graph of the body is a straight line, there are three cases. In this is first case, when the speed of the body remains constant. If the speed time graph of the body is a straight line, here is this is the straight line graph. Okay, there is a time axis here, and this is speed axis, and between them there is a straight line, that's AB. OC is that is AB is a parallel to OC, and so it is shown that if the speed time graph of the body is a straight line parallel to the time axis, it is the parallel to the time axis. Okay, so it is called that constant speed. Okay, constant in speed means there is no acceleration, change of speed does not take place, so it has no acceleration, so it is means that speed does not change with time, and hence there is no acceleration. This type of graph is called, it is when the first case of when the object, when the speed of the body remains constant is, this shows the constant speed, that is parallel to the time axis. Okay, and the second type of graph is speed time graph when speed changes at a uniform rate. Okay, this is uniform rate changing of the uniform, that means acceleration produced. Okay, and so when the body moves with uniform acceleration, this is the graph of uniform acceleration, and its speed changes by equal amount in equal interval of time, so it is called uniform rate. This is called uniform acceleration. This is the graph of uniform acceleration. We can find three things with the help of uniform acceleration, this type of graph. Okay, we can find acceleration by speed time graph. Okay, acceleration equal to change in speed by time taken. Here we consider the two axes, time axis and speed axis. There is a straight line graph, OP is already drawn, and so from the P we draw PR perpendicular to speed axis and PQ perpendicular to time axis, and so it is acceleration equal to change in speed. This is the speed also, QP and OR is speed. This is, both are parallel to each other, and so we can write PQ is the in place of change in speed, and time is already this is given OQ, and so acceleration we will find acceleration by the help of this formula. Okay, and by this representation PQ by OQ. Okay, and now second is also we will find the distance table. The distance table by a body also calculated from speed time graph. We can also calculate speed time by this process, the distance table by the speed time graph. Okay, here is distance table means that is area of OPQ, triangle OPQ. This is the triangle OPQ. Okay, OPQ. Okay, triangle OPQ is the half part of this rectangle. Okay, and this is, and so we can write that area of triangle OPQ equal to 1 by 2 into area of rectangle ORPQ. Okay, this is the half part of this rectangle, so we can write this likewise, and so 1 by 2 into OR into OQ. 1 by 2 into OR, area of triangle equal to, we know in previous classes, okay, that area of triangle equal to 1 by 2 into base into height. Okay, so therefore 1 by 2 into base, that is OR. This is area of rectangle equal to, already this is the triangle, but area of rectangle equal to length into breadth. Okay, once again, and the area of rectangle ORP equal to length into breadth. Okay, this, suppose that this one is length and this one is breadth, and so
area of rectangle ORP equal to OR into OQ, OR into OQ. This is length and this is breadth. Okay, and so 1/2 also given. This is the formula to finding the distance traveled by the body in such a situation. Okay, and now one more situation is that speed time graph when the initial speed of the body is not zero. It is given speed time graph when the initial speed is not zero. Here is the graph, here is the picture, here is the representation of graph. Here OB is initial velocity, that is u. Okay, and there is a uniform acceleration also. Graph of this straight line also show uniform acceleration, but here u is something. Okay, and so this is the time axis and this is the speed axis, and so we draw CA perpendicular to time axis. Okay, and so this picture makes already trapezium OABC, is it like a trapezium? Okay, we know that the in mathematics top subject we held area of trapezium equal to sum of the parallel sides into height by 2. First of all, we know about what is trapezium. Trapezium is a kind of quadrilateral in which one pair is parallel and another pair is non-parallel. Okay, here OA and OBC are non-parallel sides and OB and AC are parallel sides. So this is the formula to finding the distance by this graph. Distance traveled by the body is equal to the area of trapezium OBCA. Okay, and area of trapezium equal to sum of two parallel sides by 2, that is we can also write this 1/2 into sum of parallel sides into height. Here is the sum of parallel sides OB plus AC, and there is height, this OA is the height, and so OA is given, there is 2 is also given here, and so distance table we can find the distance table by this process. Okay, and the third case is very simple case. This is by the speed time graph also. Speed time graph when speed changes at a non-uniform rate, that means there is a non-uniform acceleration. This graph shows non-uniform acceleration. This is also a curve graph is also show non-uniform acceleration. So there is a this is the last case of speed time graph, and once again I would like to explain you in Hindi. Okay, आप देखेंगे यहाँ पे when the speed of body, ये 3 केसेस है हमारा ये मोशन चैप्टर से स्पीड टाइम ग्राफ का। पिछले वीडियो में पढ़े थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है। इसका 3 केसेस है। अब 3 केसेस में पहला केस हमारा कि व्हेन ये दिया है कि कांस्टेंट स्पीड को शो करता है, ये मतलब कि एक्सेलरेशन इस पर शो नहीं होता है। आप देखेंगे ए बी एक पैरेलल लाइन है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इस तरह का जब ग्राफ जब आएगा तो आप समझेंगे क्या ये हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए लिखा हुआ है इट मीन्स दैट स्पीड डज नॉट चेंज विथ टाइम। स्पीड जो है किसी इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज नहीं होता है। इस कारण से जब स्पीड चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जब भी प्रोड्यूस स्पीड चेंज होने के बावजूद ही वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। तो इस केस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, दैट इज कांस्टेंट स्पीड को शो करते हैं इस तरीके से। दूसरा केस हमारा स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। आप समझेंगे इसको क्या, ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है। याद रखिए इसमें हमारा है स्पीड और इधर में टाइम है, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन हमारा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करने के लिए दिया गया है। इसके सहारे हम फाइंड करते हैं, पता करते हैं, 2-3 बातों का पता करते हैं। डिस्टेंस और ये पहले तो एक्सेलरेशन पता करते हैं। एक्सेलरेशन के लिए देखिए यहाँ दिया स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे पता करते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन स्पीड बाय टाइम टेकन। ये स्पीड हमारा क्या, ये ओ आर और क्यू पी, ये हमारा स्पीड लाइन है, इसलिए हम लिख सकते हैं चेंज इन स्पीड की जगह पर पी क्यू, और फिर ये ये नीचे टाइम टेकन के जगह पर ओ क्यू लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया इसके सारे, और 2 और केसेस है इसके सारे पता करते हैं हम लोग। दूसरा है क्या, डिस्टेंस टाइम ट्रेवल्ड बाय द बॉडी आल्सो कैलकुलेट फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। कह रहा है कि डिस्टेंस निकालने का ही फार्मूला इसके सारे हम निकालते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारा काम आएगा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है मोशन चैप्टर का। तो डिस्टेंस टाइम ट्रेवल देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, इसके सारे लिए हम डिस्टेंस जो है ये देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ दिया,
ये देखिए ये डिस्टेंस निकालना होगा, तो ये हम ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल का निकालेंगे, तो उसके साथ निकलेगा। अब ये एरिया ऑफ ट्रेंगल जो है, ये देखें रेक्टेंगल का हाफ है ये पूरा पिक्चर देखते हैं तो रेक्टेंगल है, इसका हाफ है हमारा एरिया ऑफ ट्रेंगल, ओ क्यू पी कहिए या ओ पी क्यू कहिए, ठीक है। तो ये दिया हुआ है और इक्वल टू फार्मूला इसका होगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओवर, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हाफ है इसलिए 1/2 लिखने के बाद में यह कह सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ आर पी क्यू। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये लेंथ मान लिया हमने, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ओ आर हो गया लेंथ और ओ क्यू ब्रेथ हो गया, तो ये हो गया हमारा स्पीड इंटू टाइम, वो यूज़ करेंगे 1/2 इंटू ओ आर इंटू ओ क्यू। तीसरा केस है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो। यहाँ देखिए इनिशियल स्पीड यहाँ कुछ दूर के बाद वो चला है, वो मतलब कुछ दूरी चलने के बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करता है। तो हम देखेंगे अब यहाँ यू का वैल्यू कुछ है, मतलब इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग वेलोसिटी हमारा या स्पीड का ही कुछ है यहाँ पे, इसलिए हम इस तरह का जब ग्राफ होगा तो इस तरह का पिक्चर आएगा, और इस तरह के सिचुएशन में ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऐसा पिक्चर आएगा। और देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को शो कर रहे हैं हम लोग, तो ये इसके सारे फिर निकालते हैं हम लोग। अब देखिए ये पिक्चर आ गया, ये देख रहे हैं ना, ओ बी सी ए या ए सी बी ओ कह सकते हैं या ओ ए सी बी कह सकते हैं, ये हमारा एक ट्रापेजियम आया, तो इसके सारे भी हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रापेजियम ओ बी सी ए। अब ट्रापेजियम में देखेंगे इसका फार्मूला होता है ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्लास 8 में आप पढ़े होंगे इसका फार्मूला, जिसमें खास करके चैप्टर मैथमेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे आप लोग। तो ये देखिए यहाँ देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड से, देखिए ये हमारा पैरेलल साइड्स है, ओ बी और ए सी दोनों पैरेलल साइड्स है, और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स है। तो बताया आपको, मैंने बताया था इंग्लिश में कि आपका एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसका एक पेयर पैरेलल दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होता है। देखिए ओ ए और बी सी ये नॉन पैरेलल साइड्स है, और ओ बी और ए सी पैरेलल साइड्स है, तो ये पैरेलल साइड्स का सम हमने यूज़ किया ओ बी प्लस ए सी इंटू ओ ए, ये हाइट हो गया और बाई 2, और इसके साथ निकाल। और सबसे अंतिम केस हमारा है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट, दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को शो करता है हमारा, ये देखिए कर्व ग्राफ है, कर्व लाइन की तरह है, ये सर्किल का जो ग्राफ पार्ट होता है उस तरह से बना हुआ है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को शो कर, इस तरह ग्राफ जब भी शो करेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को। और यहाँ देखिए टाइम एक्सिस और स्पीड एक्सिस के बीच में एक ग्राफ तैयार हुआ, तो ये शो करता है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। इस तरह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से आप सारे लोग देखेंगे और तभी न्यूमेरिकल बनेगा, और इससे प्रश्न भी परीक्षाओं में, आगे की परीक्षाओं में आते हैं। फिर सही ठीक से आप सबको देखना है, वॉच कीजिए ठीक से इस वीडियो को, और फिर से आप सबको ऑल द बेस्ट और टू ऑल ऑफ यू, एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।